A very warm and pleasant morning to one and all present over here. This is Amir Iqbal, student of class 8 Vivekanand, here to host today's morning assembly. School, stand at ease. School, attention. Prayer is not only the words we listen to, but let them resonate, giving each of us strength, peace, and courage to handle lives ahead. So I would like to call prayer group for prayer. Take prayer position, join your hands, close your eyes, and bow down your heads. Prayer begins. School, attention! Preamble is a way to remind ourselves with the core values of our nation. So here comes Shashwat for preamble. We, the people of India, having solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity and the unity of the nation in our Constituent Assembly this 26th of November 1949 do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. Jai Hind, Jai Bharat. And spice of our day. So here comes Sujata for thought. Morning to one and all present here. This is Sujata, a representative of class 9 Kalam, and I am here to deliver a wonderful thought. And my thought is, the sand cannot be polished without friction, nor man perfected without trials. In Hindi, रत्न को बिना घर्षण चमकाया नहीं जाता, नहीं मनुष्य को परीक्षण के बिना पूर्ण बनाया जा सकता है. It's time to know what's happening around the world. So here comes Hira to enlighten us with current happenings. नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित गुरुजन और मेरे प्यारे मित्रों, मैं हीरा कक्षा 9वीं की छात्रा आप आज के प्रमुख समाचारों की प्रस्तुति हेतु समक्ष उपस्थित हूँ. अंतर्राष्ट्रीय समाचार. इजराइल ने धमकी दी कि यदि आतंकवादी इस सप्ताहांत बंधकों को रिहा नहीं करते हैं तो वह हमास के खिलाफ एक नया वार शुरू कर देगा तथा तबाह गाजा पट्टी के फिलिस्तीनियों के विस्थापित करने के लिए अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को लागू कर देगा. Israel threatened to launch a new war on Hamas and implement US President Donald Trump's plan to displace Palestinians from the ravaged Gaza Strip if the militants do not release hostages this weekend. राष्ट्रीय समाचार.
संसदीय समिति ने प्रयागराज महाकुंभ के यातायात संबंधी समस्याओं को लेकर राजमार्ग निकाय को फटकार लगाई। कांग्रेस नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली समिति ने सवाल उठाया कि प्रयागराज की ओर जाने वाले राजमार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम के बावजूद टोल क्यों नहीं हटाया। Parliamentary panel wraps highways body over Prayagraj Mahakumbh traffic woes. The committee headed by Congress leader and MP Vesi Gopal questioned as to why the toll on highways leading to Prayagraj was not waived off if the face of massive traffic jams. खेल समाचार। इंडिया विरुद्ध इंग्लैंड। पार्थिव पटेल ने कहा कि हर्षित राणा हिट द डेक गेंदबाज हैं और इसलिए उन्हें पुरानी गेंद से अधिक विकेट मिलते हैं। राणा इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 30 गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। पार्थिव पटेल said that Harshit Rana is the hit the dead bowler and hence he gets more wicket with the old ball. Rana finished the top wicket taker amongst the pacers in the ODI series against England. सोशल मीडिया समाचार। निर्माता बोनी कपूर ने इंडियाज गॉट लैटिन शो में रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना की अश्लील टिप्पणियों की आलोचना की। उन्होंने आत्म सेंसरशिप की मांग की और कहा कि वह उनकी टिप्पणियों का समर्थन नहीं करते हैं। Today is the birthday of Srishti, Tamim and Krishna. So let's sing birthday song for them. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sanities! School attention! National anthem is not only a song, it is rather an ultimate emotion. So I would like to call national anthem group for national anthem. Take national anthem position. National anthem begins. Sanities! Now raise the slogan with me. Vande! Matram. Vande! Matram. Vande! Matram. Long live! Mother India. Long live! Mother India. Long live! Mother India. Now assembly is declared to be dispersed. You can move to your respective classes. Thank you for joining us. Have a great day.